हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम सीखने जा रहे हैं एरिया कमांड। किसी भी एसपीएस को एरिया कैसे निकालते हैं ऑटोकैड में। तो हम एरिया कमांड के लिए हम शॉर्टकट टाइप करेंगे ए एंटर। फॉर एग्जांपल हम तो ये टोटल एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो स्पेसिफाई द फर्स्ट, सबसे पहले हम ऐड एरिया पे क्लिक करेंगे। ए स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर, देन सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर। ओके, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे, देन इंटर। द टोटल एरिया इज शोइंग 42 मीटर, 42 स्क्वायर मीटर। अगर हमको इस टोटल एरिया में से 42 स्क्वायर मीटर में से हमको ये एरिया सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम सिंपली इस सब्सट्रैक्ट एरिया पे क्लिक करेंगे और शॉर्टकट इस इंटर। लेकिन ये एरिया को फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट इंटर। So the total area is subtracted 9.1 square meter. So total area is 42 square meter. Minus 9.1 square meter is equal to 32.9 square meter. See, if you calculate here, 42 square meter minus 9.1 square meter. So the total area is 32.9 square meter. If you want to see the summary of this area command, just press from the button, your computer button, control F2. Okay, then you can see it here. So first the total area is coming 42 square meter. The total area is 42 square meter, and the command is prompted specify the first corner point, subtract or object slash subtract area. So मैं S को टाइप किया था तो सब्सट्रैक्ट किया था मैंने। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम वो एरिया को सब्सट्रैक्ट किया था। वो एरिया 9.1 स्क्वायर मीटर था। सो 42 स्क्वायर मीटर में से 9.1 स्क्वायर मीटर सब्सट्रैक्ट किया था। टोटल एरिया इज 32.9 स्क्वायर मीटर। ओके, आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा एरिया कमांड से। सो प्लीज़ like, comment and share this video, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you for watching my channel. Thank you. Bye bye.